Ra, you've given me serious No. trust issues. I mean, we all live under a force that's not even a force, and we don't know what is it. Come on, we cannot even define gravity. And honestly, trust issues तो बनते हैं. ये physics है. The deeper you go, The weirder it gets. yes. Don't you know that there's a force called gravity which pulls everything towards the surface of Earth? ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है और न्यूटन गलत भी नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी फोर्स नहीं है. क्योंकि सोचो, अगर ग्रेविटी फोर्स होती तो जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिलियंस ऑफ माइल्स दूर है वो कैसे कनेक्ट करते और कैसे कहते कि आ जाओ, पास आ जाओ. हाउ वुड दे पुल ईच अदर? थोड़ा सा तो ब्रेन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, मान लिया gravity isn't a force, but then what is it? I hope it doesn't have identity crisis like you. ये स्पेस टाइम फैब्रिक है ना? अब वो जो है वो एक ह्यूज मास है. Fine. उसने स्पेस टाइम को बेंड कर दिया. ये आ गया कर्वेचर. अब ये बॉल फेंक दी. इसने क्या किया? इसने इस कर्वेचर को फॉलो किया और ये उस तरफ चली गई ह्यूज मास की ओर. इसी तरह ये बॉल भी फेंक दी और ये भी इसी की ओर हो गई. समझ आ रही है? Okay, cool. I think I get it. तो आप क्या कहना चाहते हो is, say I throw this pen हाँ. in this setup, so it kind of slides towards the huge mass. And I guess what you're trying to say is that the same thing happened with my ball earlier. It just followed the curve created by the huge mass of Earth. And an illusion got created that my ball was being pulled. But IRL, it was just following the space-time curvature. But in Shira, हम in theory इसको prove कैसे करेंगे? I mean, space is invisible, right? So how do we know that it has got a bend? Space is invisible, but your brain is non-existent. In 1919, scientists proved that during an eclipse, the starlight bent around the sun to reach us. Still, how did the sun bend the huge mass of space? And why did the light bend around the burning sun? The sun did not bend the huge mass of the space, but then the huge mass of the sun created a bend in that space-time curvature. And when that bend was That's what I created, said, I guess. no, you didn't say that. And when that bend was created, starlight was forced to follow that bend in order to reach us. Right, but can you explain it at a smaller level, say at atomic or subatomic level? देखो मरियम, at the quantum level ग्रेविटी को थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस तो हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमें ग्रेविटॉन नहीं मिला. Graviton? ग्रेविटॉन वो पार्टिकल जो सपोजिटली ग्रेविटी को कैरी करेगा. एंड क्वांटम लेवल पे इसका नाम मिलना मीन्स अभी छोटे लेवल पे डेफिनेशन तुम्हारे छोटे दिमाग के लिए अवेलेबल नहीं है.